Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Muhammad Atiq Anwar, and you're watching my channel, Muhammad Atiq Anwar, an education for us all. नाज़रीन खुश आमदीद, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर an education for us all. एक दफ़ा फिर हम किचन में हैं, तो जैसा देख सकते हैं एक कुकिंग सेशन होगा. बहुत सिंपल कुकिंग डिश है जी. ये है चिकन with noodles or noodles with chicken. Okay, so various simple things such as the spices are here and the onion is here and we have some paste. So this is a speciality by our master chef Mrs. A Junior, and I'm going to ask her to come and explain each step. हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, पहली स्टेप बताइए. हमें सबसे पहले ऑयल ऐड करके उसमें प्याज ऐड करना है, उसके बाद टमाटर ऐड करके चिकन वगैरह ऐड करके उनका सही मसाला बना के फिर हमने उसमें अपने नूडल्स ऐड करने हैं. सबसे पहले हमने नूडल्स को भी आधा बॉईल कर लेना है. Okay, so we're doing the noodles separately and then making a masala with the chicken basically. Okay, so we have our pot here for the chicken, I think, and another pot for the noodles. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Got some oil going in there. Okay, so this pot is has got water in it and that has got oil in it. We're just waiting for it to heat both. Okay, so the oil is warm there nicely. Can we add the onions there? नाज़रीन सबसे पहले हम onions ऐड करेंगे. हाँ जी, ये कितनी देर के लिए करेंगे? 4 मिनट के लिए. 4 के लिए. It's nice and soft. नाज़रीन ये देखो वाटर बॉयल हो रहा है, तो इसमें अब हम नूडल्स ऐड करते हैं. So the oil is nice and soft there. We're ready for our chicken, I think. So we're adding, this is 500 grams of chicken, boneless. We call it mix, which is thigh and breast mix. ये हमारे एक तरफ नूडल्स रेडी हो रहे हैं और दूसरी तरफ चिकन रेडी हो रहा है. चिकन को भी तकरीबन हम 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे और हम अपने नूडल्स को भी 5 मिनट तक मज़ीद बॉईल करेंगे. फिर हम इनका मसाला बना के मिक्स कर देंगे. Okay, viewers, we think our noodles are ready, so we're going to turn that off and drain that, and we're going to add the masalas to this. Can we add the masalas to that, please? Tomatoes first, sorry. एक हम अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तो टमाटर ऐड करके उसको थोड़ी देर इसमें मिक्स करके उसके बाद हम मसाले ऐड कर देंगे. मसाले आपने थोड़ी देर के बाद ऐड करने हैं. Okay, 2 minutes, 3 minutes? जी 3 minutes. Okay, so that's cooking nicely. So the first thing that we're going to add is garlic and ginger paste. 1.5 tablespoons. तकरीबन हमारा मसाला रेडी हो चुका है. अब हम इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड करेंगे. Okay, so the chicken is cooked nicely, so we're going to add the masalas, which were the usual. We had turmeric, we had garam masala, we had chilies there. So we forgot to mention those. So how long are we cooking this for? 3 minutes. 3 more minutes. Excellent. अब हम अपने मसाले में चिकन में नूडल्स ऐड करेंगे. Okay, so the chicken is ready. Final thing going in is the noodles. To give that a real good mix. And there is our dish. Chicken noodles. Or masala chicken noodles, I should say. And there we have it, viewers, our final product. Masala chicken noodles. Nice and simple. I do hope you will try that at home.
It's such an easy dish. It's taken us only 15 minutes to make. I do hope you will try it. Please, guys, once again, the appeal is tell all your friends about it. All your friends on Facebook, all your friends on WhatsApp. Please keep watching. Please keep making comments. Please keep making suggestions. Until the next time, I say thank you for watching. Look after yourselves. Look after others. अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना. It's goodbye from me. It's Allah Hafiz from me. We'll leave the last word to our master chef. जी अस्सलाम वालेकुम. देखें जी हमारे नूडल्स, चिकन नूडल्स रेडी हो चुके हैं. तो आप भी हमारी रेसिपी को फॉलो करें, आप भी बनाएं और खाएं. अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें. हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. Fi manillah.